So hello guys and welcome back to the channel. So if you guys don't know about me, hello, my name is Sahil and I am candidate master on CodeForces. I am 5-star on Code Chef. I have been to ICPC regionals and I have also cracked Google Code Jam round 2. तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम डी फ्रॉम राउंड 777 and I have already made an editorial about problem C. You can watch it on the channel. तो स्टार्ट करते प्रॉब्लम के साथ Madoka is going to enroll in university, whatever that is, but she stumbled upon a difficult task during the entrance exam. A number is called good if it is a multiple of d, and number is called beautiful if it is good and it cannot be represented as a product of two good numbers. So let's digest this first. तो अपने को दिया we have given a good number. A number is good if it is a multiple of d. So let's say कि ये है, let's say a times d, right? Where a is something. Then a number is called beautiful if it is good and it cannot be represented as a product of two good numbers. So जो हमारा beautiful number है, right? Beautiful number is a multiple of d because it is good. So it is something like b into d. But जो हमारा beautiful number है, it cannot be represented as a product of two good numbers. So beautiful is not of type let's say x into d into y into d, right? और इधर कुछ भी हो सकता है, anything random है. So this becomes x into y into something into d square. तो जो अपना beautiful number है वो इस फॉर्म का नहीं है. So it is our beautiful number does not contain d square, right? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है. ब्यूटीफुल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ d but it is not a multiple of d square, right? So beautiful is multiple of d but d square का multiple नहीं, not multiple of d square, right? तो ये दो ऑब्जर्वेशन मिल गई हैं हमको अभी तक. And then what he says is given a good number x, determine whether it is possible to represent in at least two different ways as product of beautiful numbers. Two ways are different if the sets of numbers are different. तो हमको एक नंबर दिया हुआ है, we are given some number x जो कि good है. So it is of type, let's say anything, let's say some a into d. तो हमें इस टाइप का नंबर दिया है, हमें इसे ब्रेक करना है in beautiful numbers, right? We need to break this up into some set of beautiful numbers. Let's say this is set 1. तो यहाँ पे मेरा beautiful number हमने पहले ही देखा, it is of type b multiple of d, so it is something like b into, let's say this one becomes a1 into d, this one becomes a2 into d, and this one becomes a3 into d, right? Let me write this beautifully. So this is a1 into a2 into d. तो ये random है, so there can be n numbers of these. तो and ये this is not of type d square क्योंकि हमें पता है beautiful number is not of type d square, multiple of d square. तो अपने को क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है अभी इससे कि जो हमारा x है we need to find at least two such different sets. तो अगर हमारा x सिर्फ एक d का मल्टीपल है, so like अगर हमारा x is of type a into d, right? तो हम इसको ब्यूटीफुल नंबर्स में ब्रेक ही नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये है तो दिस इज ओनली a1 into d and then some
डिस्टिंक्ट नंबर A2, बट इसके साथ D नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी एज्यूम करा है कि देयर इज ओनली वन D, दैट इज कि दिस इज ऑफ टाइप D समथिंग इनटू A, राइट। तो इसमें सिर्फ एक ही D है, दैट इज A1 इंटू D। तो इसको इसके दो डिस्टिंक्ट सेट्स बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये दो, एक ही नंबर ब्यूटीफुल बनेगा, दूसरा नंबर कभी ब्यूटीफुल बना ही नहीं सकते। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल सेट इन दिस केस। तो अगर हमारा x है, इफ इट इज जस्ट डिविजिबल बाय d, लाइक देयर इज ओनली वन d फैक्टर इन इट, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। So what that means is our x should always be divisible by d square. तो अगर हमारा x d square से divisible है, it will be of form a into d square. Then it is possible to break it into a1 into d and a2 into d, right? एंड यहाँ पे हम a1 a2 के फैक्टर्स स्वैप करके, let's say we swap some factors from a2 to a1 and we can make some new a3 into d, a4 into d. तो हम ऐसे दो डिस्टिंक्शंस बना सकते हैं। सो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, दैट x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ d स्क्वायर। तो इसका कोड साथ साथ देखते चलते हैं। तो यही मैंने कोड यहाँ पे करा है, लॉन्ग लॉन्ग एक्स डी सी इन एक्स डी। अगर x हमारा d स्क्वायर का मल्टीपल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हमारे x में सिर्फ एक ही d है तो इट इज नेवर पॉसिबल टू ब्रेक इट इनटू टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ ब्यूटीफुल नंबर्स, राइट। तो हमारे पास अभी ये ऑब्जर्वेशन आ गई है। सो हम आवर x इज ऑफ फॉर्म d into d into d some, not three d's, just two d's into something, let's say this is some remaining factor। तो मैंने क्या करा, मैंने काउंट कर लिया how many d's are there in x। let's count the number of d's in x as the d count, right। ये मैंने d काउंट रख लिया एंड जो d's को छोड़ के जो भी बच रहा है उसको मैंने काउंट कर लिया रिमेनिंग फैक्टर। So anything that is left after dividing x by d's, I called it remaining factor। So if you see in my code, मैंने यहाँ पे x को डिवाइड करता गया d से and I kept incrementing count d, और जो एंड में बच गया that was my remaining factor, right। तो let's say ये मेरा d है, ये मेरा d है। अगर यहाँ पे हो सकता है और भी d's हो, let's say कि है, और अगर ये मेरा रिमेनिंग फैक्टर है। अगर मेरा रिमेनिंग फैक्टर अगर मेरा रिमेनिंग फैक्टर प्राइम नहीं है, अगर ये दिस इज ऑफ फॉर्म, लेट्स एनी फॉर्म, लेट्स से दिस इज ऑफ फॉर्म a into b, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, देयर कैन बी टू सेट्स। इसके मैं टू सेट्स कैसे कर सकता हूँ, आई कैन मेक दिस d रिमेनिंग फैक्टर into d, एंड देन अगर और भी d's हैं यहाँ पे, लाइक इफ देयर आर एक्स्ट्रा d's हियर, राइट। तो ये जब यहाँ पे ये डाल रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे देयर कैन बी सम एक्स्ट्रा d's हियर। हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट दो डी तो उसमें है ही है, राइट। इफ देयर एक्स्ट्रा डीज है तो मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दिया। तो ये मेरा एक सेट हो गया, ये देख रहे हो, ये ब्यूटीफुल नंबर है, ये भी ब्यूटीफुल नंबर है, और डीज तो ब्यूटीफुल है ही है, राइट। और दूसरा सेट बनाने के लिए आई कैन ब्रेक दिस ए बी है, आई कैन ब्रेक दिस ए बी एंड आई कैन सेंड ए हेयर, आई कैन सेंड बी हेयर। दिस विल बिकम ए इंटू डी, दिस विल बिकम बी इंटू डी, और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा डीज पड़े हैं तो वो डीज वैसे ही रहेंगे, तो एक्स्ट्रा डीज है तो ये ऐसे ही रहेंगे। मैंने दो डिस्टिंक्ट सेट्स बना लिए, राइट। सो ये मेरा केस नंबर 1 हो गया कि जब मैंने इसको डी से डिवाइड करता तो अगर रिमेनिंग फैक्टर है, इफ रिमेनिंग फैक्टर इज नॉट प्राइम, राइट, इफ रिमेनिंग फैक्टर इज नॉट प्राइम देन आई कैन ऑलवेज फॉर्म टू सेट्स, राइट। तो ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। तो अगर आप देखोगे कोड में तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, राइट। इफ रिमेनिंग फैक्टर इज नॉट प्राइम
राइट। तो ये मेरा कंडीशन नंबर 1 हो गया। फिर मैंने इसका सेकंड एल्स कंडीशन लगाया और लेट्स अज्यूम कि ये हमने पता लगा कि अगर ये प्राइम नहीं है तो आंसर हमेशा होगा। तो फॉर फर्दर केसेस वी विल assume remaining factor is prime and this prime factor I will call this p from now on। ठीक है, तो अब मैं assume कर रहा हूँ d जो मेरा x नंबर है वो इस फॉर्म का है, d some extra d's here अगर होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा p। अगर मेरे नंबर में x में अगर सिर्फ दो ही d's हैं, लेट्स से सिर्फ दो ही d's हैं, तो दिस विल लुक लाइक d एंड p, राइट। तो अब देख रहे हो, अब कैन आई मेक टू सेट्स हेयर, क्योंकि मेरे को पता है p प्राइम है तो मैं p को स्प्लिट तो कर नहीं सकता। सो व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर हेयर, ओनली कॉम्बिनेशंस आर p इंटू d एंड d। मैं p को यहाँ भेज दिया, दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2 d, फिर मैंने p को यहाँ भेज दिया, दिस इज p इंटू d। पर क्योंकि ये सेट्स हैं और ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट बन रहा है, यहाँ पे दो सेट नहीं बना सकता मैं। तो यहाँ पे मेरा सेकंड केस आ गया। अब मेरे को पता है p प्राइम है एंड सो इफ d इज 2 नाउ, if count of d is 2 now, then this is impossible। So this is my second case here। uh, from, let's say, from here on the remaining factor is prime, let's say equal to p if count of d is equal to 2। मैंने अभी बताया we cannot break this into two sets, answer is false, right। और अब एक और कंडीशन, लेट्स से d का काउंट 2 नहीं है, d का काउंट 2 से ज्यादा है। तो इफ काउंट ऑफ d इज ग्रेटर देन 2 बट d इज प्राइम, ये मैंने एक और assumption ली। दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली केस वर्क, तो मैं बेसिकली केस वर्क एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटुइशन इसके पीछे नहीं है, इट वाज लाइक जस्ट मैथ ही थी। सो नाउ आई एम assuming there are any arbitrary number of d's, पर अगर अपना d प्राइम है तो आई कैन नॉट ब्रेक डाउन d। तो only possible combination, only possible set is p into d, d d whatever number of d's are here। ये मेरा सेट नंबर 1 है। अब मैं p को उठा के किसी और के साथ ज्वाइन कर दूंगा पर ये सेट चेंज नहीं होगा, सो देयर इज ओनली वन पॉसिबल सेट इन दिस केस आल्सो। तो अगर मेरा d प्राइम है तो भी कोई सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो इफ माय d इज प्राइम, still the answer is false। तो मेरे पास क्या कंडीशंस बन गई इसके आगे, तो अब यहाँ पे एक तो ये हो गई काउंट ऑफ d is greater than 2 and मेरा d is not prime, that is d is of form let's say a into b from now। तो ये मेरे पास अब तक एक मेरी assumption ये शुरू हो गई यहाँ से, I will mark this as assumption like this is true from here point, so this is implication, so this is implies this implies। मेरे पास अब तीन implications आ गई हैं। Implications that I have got are count of d is greater than 2, my d is not prime, i.e. d is of form a into b, and my remaining factor is prime, remaining factor is of form p। तो यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं फॉर अ केस वेयर d is greater than, जहाँ पे count of d is greater than 2, let's say we have d 3 or more, we have 3 or more d's। तो यहाँ पे assumption क्या है कि d is of form a into b, right। so I can break this third d into a into b, like for convenience। Then what I can do is एक तो पहला सेट I can make a first set here, set here is d, let's say p मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, right।
So set here is PD D D D D D. So this is my set 1, right? And for this case I can, क्योंकि अब B मेरा prime, I know that my B is not, sorry, my D is not prime, so I can break my D and मैं इसमें से shift कर सकता हूँ, like I can shift my A here and my B here, right, and my P here, something like that. So इसमें बन जाएगा मेरा A into P into D and something like B into B into D into D. तो ये मेरे दोनों अलग अलग सेट्स बन गए। तो मैं बोल सकता हूँ if count of D is greater than 3 here, then answer is always possible, right? If count of D is greater than 3, the answer is always possible, right? तो ये मेरा एक और हो गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या पता लग गया, अब यहाँ पे मेरे पास एक और implication आ गई, implies count of D is equal to 3 from here। तो यहाँ पे जो मेरा ग्रेटर देन 2 था, ये मेरी कंडीशन और रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब मेरी ये कंडीशन काउंट ऑफ D इक्वल टू 3 हो गई। तो अब मेरे पास 3 कंडीशंस क्या हैं, काउंट ऑफ D is equal to 3, D is equal to form A into B and my remaining factor is of form P। तो अब मेरा आई कैन लाइक, अब मैं क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नंबर को D into P। अब यहाँ पे लाइक देयर वाज एन ऑब्जर्वेशन हियर कि यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे I cannot split this into two sets. The only case that is जब मेरा D P square के equal है, right? If D is equal to P square, then this will be P square, this will be P square, this will be P square। अब मैं जहाँ भी P को shift करूँगा, only set I will form is P square and P cube। This is the only set I can form। तो अगर मेरा D यहाँ पे P square के equal है, right, ये मेरे को लगता है जरूरत भी नहीं है किसी कंडीशन की, I can remove condition। If my D is equal to remaining factor square, then this is not possible क्योंकि सिर्फ P cube P square case, this is only set I will get। और किसी भी फॉर्म का D हो, let's say D is of form something A into P, right, then I can form set like A P square A P A P। ये मेरा set 1 हो गया। I send my P here। और मैं सेट इसमें क्या बना सकता हूँ, I can send my A here and my P square. I can send my P square here and I can send my A here। So this will become A P square. This will become A square P and this will become A P cube। So these are the two different sets I will get। So this was basically casework। Yeah। और अगर this was the only false case, right, इसके बाद सब cases में this is possible। So ये बहुत सारा केस वर्क था। दिस वाज वेरी बैड प्रॉब्लम I would say in my opinion। So thank you for watching the video guys। Also I will leave my code for this problem in the description as well or in the comment section as well क्योंकि इसका code I think you guys will have to look on the code for this problem। Also, thank you to Newton School for helping with this video। If you guys are looking for a job in the tech field, these guys have a very good pay after placement full stack development course। ये आपको ऑफर करेंगे 5 lakh minimum package, but you can achieve as much as you want to। Sky is the limit here। You will get placed in top MNCs like Google, Zomato, etc। Also, there is zero upfront fees, there is zero hidden fees। कोई upfront fees नहीं है। This is a 6 month course for absolute beginners as well। अगर आपका aptitude अच्छा है, you just have to give a aptitude exam and you will be chosen for the program। Also, all their mentors are from top MNCs like Google, Microsoft, Goldman Sachs।
So you can be assured that the content is really good. And if you are really looking for a job in the field of software development, uh, I, I think you should definitely go for this course, as this will give you a great head start. So thank you for watching the video, guys. And if you guys have any doubt, just let me know, and I will be happy to help you guys with anything.